इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आप ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलेंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे याद रहेंगे, कैसे एनवायरनमेंट मिलेगा और कैसे आपकी ईस्ट वेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के साथ प्रैक्टिस होगी। आज का हमारा सेशन का एजेंडा ही यही है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैंने जो ये अवार्ड विनिंग मेथड डिस्कवर की है, इसको धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, आपका ब्रेन भी स्टिमुलेशन होगा, इंग्लिश में ही आपकी ब्रेन की सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ट्रांसलेशन बंद होगा। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्रेस करना भी सीख जाएंगे और पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करेंगे ना। आपने क्या करना है, आज का ये जो पहला दिन है, इसमें आपने सिर्फ सिंपल चीज़ करनी है कि मैं यहाँ पर अभी 2 बार ऑडियो स्टोरी चलाऊँगा, द ब्लाइंड लव। ठीक है, आपने 2 बार इसे सुनना है और तीसरी बार हम वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए जाएंगे, जिसमें मैंने स्टोरी में कुछ हार्ड वर्ड्स जो इस्तेमाल किए हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, लिखने हैं। वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट, ट्रांसलेशन बंद होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए 8-10 ही सेंटेंसेस लेंगे और उसके बाद हम कल ड्रास्टिकली 1 घंटे तक का सेशन करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस, स्टोरी के प्लॉट को आपको अंडरस्टैंड करके, प्रोसेस करके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो उसी मीनवाइल, उसी प्रोसेस में आपका ब्रेन इंग्लिश में सोचने लगेगा और इंग्लिश में ही आपको आंसर्स देने लगेगा। आई नो मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बोला है अभी, बट यू जस्ट हैव टू बी रिलैक्स्ड, ओके। जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड इट। स्टोरी का प्लॉट और इमोशंस को समझने की कोशिश करना और स्टोरी को विजुअलाइजेशन होने देना। आई गारंटी यू कि आपका ब्रेन आपको आंसर्स देने में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लाइंड लव। लिसन द ऑडियो स्टोरी केयरफुली. There was a blind girl. Her name was Aliyah. She hated herself badly just because she was blind. She hated everything and everyone except her loving boyfriend Sid. No matter what, he was always there for her every time. One day, Aliyah and Sid met each other at the Hanging Garden in Mumbai. They sat under a big tamarind tree. Aliyah held his hand firmly and she rested her head on his shoulder. She said, "If I could only see the world, I would marry you, Sid." Sid replied, "One day you will see this beautiful world. I promise you." One day, someone donated a pair of eyes to her, and then she could see everything, including her boyfriend. She woke up after the operation, and the first thing she saw was her boyfriend. Her boyfriend asked her, "Now you can see the world, my sweetheart. Will you marry me now?" The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too, and she refused to marry him. Her boyfriend walked away in tears, and 3 days later, he wrote a letter to her, saying, "Just take care of my eyes, dear." So the moral of the story is, the human brain changes when their status and priority changes. I hope you like it. Now here we go once again for the story. Listen it very carefully. There was a blind girl. Her name was Aliyah. She hated herself badly just because she was blind. She hated everything and everyone except her loving boyfriend Sid. No matter what, he was always there for her every time. One day, Aliyah and Sid met each other at the Hanging Garden in Mumbai. They sat under a big tamarind tree. Aliyah held his hand firmly and she rested her head on his shoulder. She said, "If I could only see the world, I would marry you, Sid." Sid replied, "One day you will see this beautiful world. I promise you." One day, someone donated a pair of eyes to her, and then she could see everything, including her boyfriend. She woke up after the operation, and the first thing she saw was her boyfriend. Her boyfriend asked her, "Now you can see the world, my sweetheart. Will you marry me now?" The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too, and she refused to marry him.
Her boyfriend walked away in tears. And 3 days later, he wrote a letter to her saying, "Just take care of my eyes, dear." So the moral of the story is the human brain changes when their status and priority changes. Okay, so far so good. Did you like the story? Now here we go for the vocabulary lesson. Now इस story में जो hard words है, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स लगते हैं तो उनका सिंपली मीनिंग हम बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश टू इंग्लिश में ही देखेंगे. मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही इंग्लिश बोलूँ जो 95% आपको समझ में आए. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ज़्यादा हायर लेवल की नहीं सुननी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करना है. ओके, सो हियर वी गो फॉर द वोकैबुलरी लेसन. द फर्स्ट सेंटेंस इज, देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल, हर नेम वाज आलिया. शी हेटेड हरसेल्फ बैडली just because she was blind. Okay, now पहली ये जो दो लाइन है, I think there are no hard words. Okay, blind means the person who cannot see. Okay, name is Aliyah. She hated herself. Hate means not loving. Okay, hate means not loving. She hated herself badly. Now badly here used as very much. Why? Because she was blind. She could not see. She hated everything and everyone else. Everything and everyone else. Everyone is for the living things and everything is for the non-living things. Okay? So, accept her loving boyfriend. Accept का मतलब होता है कि सिर्फ उस चीज़ को छोड़ के या सिर्फ उस चीज़ को पकड़ के. राइट, सो बाकी सब उसे नापसंद करते थे या फिर उसको कोई पसंद नहीं था. शी हेटेड एवरीथिंग एंड एवरीवन एल्स एक्सेप्ट हर लविंग बॉयफ्रेंड सिड. ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, नो मैटर व्हाट ही वाज ऑलवेज देयर फॉर हर. नो मैटर व्हाट. ओके, नो मैटर व्हाट, अगर चाहे कुछ भी हो जाए, नो इफ नो बट, ही वाज ऑलवेज देयर फॉर हर. नेक्स्ट लाइन, वन डे आलिया एंड सिड मेट ईच अदर at the hanging garden in Mumbai. So this is the basically garden's name. Okay, I don't know कि मैंने ये क्यों लिया है, but creatively आया दिमाग में तो वो ले लिया. Okay, so मुंबई में ये गार्डन है. They sat under the big tamarind tree. Tamarind, Tamrind. Tamarind means इमली का पेड़. Okay, so they sat under the tamarind tree. Aliyah held his hand firmly. She held his hand firmly. Firmly means tightly. Okay, tightly, and she hold his hand very tightly and firmly. Okay, so and she rested her head on shoulder. Rested her head. उसने क्या किया कि उसका जो सर है वो सिड के शोल्डर पर रख दिया. Now in the next line, she said, "If I could see the world, I would marry you." She said, "I would marry you only if I could see the world. I am blind now. If I could see the world, अगर मैं देख सकती हूँ दुनिया को, अगर मैं कभी ऐसा हुआ, मैजिक, आर्ट, साइंस कभी ऐसा हुआ कि मुझे देखना आ गया, I will marry you." आलिया ने सिड से कहा. Now Sid replied. Sid responded. Okay, Sid responded. What he said, "One day you will see this beautiful world. I promise you." Promise. It's an act of doing something for someone, as you said. Promise. Okay, so there's simple word. One day someone donated a pair of eyes. Donated. Donation means it's a kind of a gift. Okay, from the charity. Okay, कोई ऐसी संस्था होती है जिन्हें चैरिटी कहा जाता है कि जो गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए जो संस्थाएं काम करती है उन्हें चैरिटी कहा जाता है. और वो एक लोगों से पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और फिर वो डोनेट करते हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए. सो डोनेशन इट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट. सो वन डे समवन गिफ्टेड और डोनेटेड अ पेयर ऑफ आईज. अ पेयर मीन्स हाउ मेनी? दो. ओके, सो वन पेयर मीन्स टू. सो someone donated a pair of eyes to her, and then she could see everything, including her boyfriend. Right? किसी ने उसे डोनेट किए और उसके बाद फिर वो देखने लगी.
She woke up after the operation. Operation, you really know what does it mean? Operation means it's an act, it's a process of cutting and opening something and जो भी पार्ट है उसके ऊपर काम करना और उसके बाद स्टिचेस करके उसे बाहर निकालना, और वो एक क्योर है, एक ट्रीटमेंट है. सो ऑपरेशन. सो आफ्टर ऑपरेशन द फर्स्ट थिंग शी सॉ वॉज हर बॉयफ्रेंड. ऑपरेशन के बाद सबसे पहले उसने जो चीज़ देखी वो थी उसका बॉयफ्रेंड. Her boyfriend asked her, Sid asked her, now you can see the world. Will you marry me now? Right? You can see the world. My sweetheart, will you marry me now? So this is simple, right? Let's go for the next. The girl was shocked. She was shocked. Shocked and surprised. Shocked and surprised दो अलग अलग वर्ड है. SHOCKED, shocked and surprised. Shocked and surprised means it's an act, it's an expression when you hear something very bad. That's a shocking, right? अगर आप कुछ बुरा सुनते हो एकदम से और फिर आप एकदम से डर जाते हो या फिर आपको शॉक लगता है तो that's a shock. एंड सरप्राइज में आपको प्लीजेंट यानी कि हैप्पी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती है. शॉकिंग या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सैड चीज़ें शॉकिंग, हैप्पी चीज़ें सरप्राइज. ओके, सो इन दोनों का एक स्लाइटली डिफरेंस है, राइट? सो शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी सॉ दैट हर बॉयफ्रेंड वॉज ब्लाइंड टू. राइट, उसको लगा कि उसका बॉयफ्रेंड भी ब्लाइंड है और इसीलिए उसे वो चीज़ बड़ी शॉकिंग लगी. एंड शी रिफ्यूज टू मैरी हिम. रिफ्यूज मीन्स सेइंग नो. इफ यू आर refusing someone, that means you are disagree, you are not buying that, right? You are not buying that concept. So refuse, she refused, she did not agree. Okay, her boyfriend walked away in tears. Tear means आंसू आना, ठीक है? He cried. He walked away in tears. And after 3 days later, he wrote a letter to her saying, just take care of my eyes. सिड ने कहा कि बस मेरी आँखों की केयर करना. So the moral of the story is human brain changes when status and priority changes. Human brain changes when status यानी कि हमारी जो वैल्यू है एक प्रकार से उस वैल्यू को ही हम स्टेटस मानते हैं, राइट? हम किस स्कूल में पढ़ते हैं या फिर किस कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर हम कहाँ पर चाय पीते हैं, कहाँ पर किस होटल में जाते हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं, दैट डिफाइन आवर स्टेटस, आवर वैल्यू. ओके, सो वो स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है जब हमारी प्रायोरिटी भी चेंज हो जाती है. ह्यूमन ब्रेन की ये खासियत है, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है तो वो चेंज होने लगता है और जो चीज़ उसे आसानी से मिली है या फिर जो चीज़ रियली वैल्यूबल है उन चीज़ों की केयर नहीं करता. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. नाउ अब चलते हैं क्विकली स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर. ई-स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का सबसे पावरफुल लेसन अगर कोई है तो वो है क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी. नाउ आपने विजुअलाइज कर लिया स्टोरी क्या है, प्लॉट समझ में आ गया, इमोशंस और विजुअलाइजेशन के साथ वो कॉन्टेक्स्ट आपके ब्रेन में है. नाउ आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट. आपको आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन करना है और आपको आंसर्स देने हैं. ओके, स्टिमुलेशन होने दो. अगर आपका ब्रेन ऑफ होगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूंगा और क्वेश्चंस के नीचे उनका आंसर्स भी लिखूंगा. अगर आप सिर्फ ब्रेन को ऑफ कर दोगे और नीचे का पढ़ोगे ना तो वो प्रोसेसिंग होगी नहीं. प्रोसेसिंग यानी क्या कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होकर आपका ब्रेन उसे रिस्पॉन्स दे. सो उसी एक्ट को आपको प्रैक्टिस करना है. सो हियर वी गो. So the first question is, who is Aliyah in the story? Try to give me answers in English. Who is the Aliyah in the story? Aliyah is a blind girl. Right. She is a blind girl. Aliyah is a blind girl. What was her name? Was his name Karina? No. What was her name? Her name was
Aliyah, right, simple. This is really very simple. Now the next question is, did Aliyah like herself at the beginning of the story? Did she like in the beginning of the story? No. She hated herself, right? She hated everyone else. She hated everything. Aliyah did not like herself at the beginning of the story. Now the next question, why didn't Aliyah like herself? Why she did not like herself? Come on, tell me. Because she was blind. Right. Aliyah didn't like herself because she was blind. Now the next question. Who was the one person that Aliyah loved? What was the name of that person whom Aliyah loved? What was his name? The person's name was Sid. Okay, that's great. You're going good. Right. अगर आप चाहे तो नीचे आंसर्स भी दे सकते हो. एटलीस्ट इस स्टोरी में से आपने कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखो ताकि स्टोरी के साथ आपका ब्रेन रेजोनेट कर पाए. स्टोरी को अगर आप रिकॉल कर पाओगे तो आपका स्पीच प्रोडक्शन काफ़ी रिदमिक होगा और ऑटोमेटिक होगा और इंस्टेंट होगा. यही प्रैक्टिस करनी है. Now, what was the name of the Aliyah's boyfriend? What was his name? Was his name Amol? Oh, no. His name was not Amol. What was his name? His name was Sid. Right. Aliyah's boyfriend name was Sid. Where did Aliyah and her boyfriend meet one day? Where did they meet one day? Did they meet at movie theater? No. Not at the movie theater. Did they meet at the college? No. Not at the college, not in the college. Did they meet at the hospital? No, not at the hospital. Where did they meet? They met each other at the Hanging Garden in Mumbai. The next question. What kind of a tree did they sit under? What kind of a tree was that? Was it a tamarind tree or was it a small mango tree? It was a tamarind tree. It was a big tamarind tree. They sat under the big tamarind tree. Did they sit under the ficus tree? No. It was not the ficus tree. It was a tamarind tree. Now what do I mean by ficus tree? Ficus tree means हिंदी में पीपल का पेड़ कहते हैं, right? So was it a tamarind tree or was it a ficus tree? It wasn't a ficus tree. It was a big tamarind tree. They sat under the big tamarind tree. Next question. What did Aliyah do when they sat under the tree? Come on, socho, jaldi socho. What did Aliyah do? Right. Did she hold his hand? Yes, right. She hold his hand firmly. Right. Did she hold his hand loosely or tightly? Yes, tightly, very tightly. She held his hand very tightly, very firmly. And what did she do? She rested her head on his shoulder. Who rested her head on his shoulder? Aliyah. Aliyah rested her head on Sid's shoulder. Did Sid rested his head on Aliyah's shoulder? No. Sid did not rest his head on Aliyah's shoulder. Aliyah rested. Aliyah who kept. Aliyah put her head on his shoulder. Where did she put her head? Where did she put her head? On his shoulder. On his shoulder. On whose shoulder? Sid's shoulder. Who put her head on Sid's shoulder? Who? Right. Aliyah put her head on Sid's shoulder. ओके सो आज के दिन के लिए मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा होगा. सो आज के दिन के लिए बस इतना ही. कल इसका सेकंड पार्ट होगा और कल हम इस स्टोरी की पूरी जो क्वेश्चन आंसर स्टोरी है वो हम स्टडी करेंगे. और आज के दिन में हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है इनडायरेक्टली पास्ट टेंस आपने एक्वायर करने की कोशिश की है. पास्ट टेंस को प्रैक्टिस किया है. 2 दिन तक हम पास्ट टेंस, 2 दिन तक प्रेजेंट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस. इस तरीके से हम फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट करेंगे स्टोरीज के थ्रू. ओके सो कल के लिए मिलते हैं.